लोकवीरं महापूज्यं सर्वरक्षाकरं विभुं पार्वतीहृदयानन्दं शास्तारं प्रणमाम्यहम्। Witnessing the sacred abode of the mountain Lord of India, Lord Ayyappa. We are witnessing Sannidhanam. The Sannidhanam in Sabarimala. The legend of Sabarimala is around 5,000 to 5,500 years old. This conclusion can be reached by analyzing. दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। अभी हम आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर भारत के दक्षिण कोने में बसा हुआ राज्य केरल का पतनमतिट्टा नामक जिले में भारत का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर शबरीमला अय्यप्पा स्वामी मंदिर में जो हो रहा है एक भक्तिपूर्ण घटना जिसको मकरविलक्कु कहा जाता है। इस मंदिर में हर दिन लाखों दर्शक दर्शन के लिए आते हैं और भक्तों को दर्शन लेने के लिए और देने के लिए मंदिर में वाइष्णव के बीच पश्चिम घाटी में पहाड़ियों के श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थिति होती है यह अय्यप्पा स्वामी मंदिर। यहाँ तक पहुँचने के लिए घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और तरह तरह के जानवरों को पार करके आना पड़ता है। इसलिए यहाँ आने के लिए एक ख़ास मौसम और समय भी होता है। जो लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आते हैं उन्हें 41 दिन का कठिन व्रत का पालन करना पड़ता है। दर्शन के लिए भक्त सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं, वो भी नंगे पैर से। और इस मंदिर की ऊंचाई करीबन 1 किलोमीटर होती है और ये पूरी 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक भक्त लोग को नंगे पैर पैदल ही जाना है। भगवान अय्यप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर प्राप्त हुआ और उनके वीर से ही बाद में शास्ता नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। Let's go a bit about the temple legend associated with Sabarimala. The world-famous Shastra temple at Sabarimala is in the Pathanamthitta district, which is located on the slope of the Western Ghats. The pilgrimage begins in the month of Vrishikam, that is mid of November, and ends with Makarasankranti, that is usually in the mid of January. About the temple, the Sabarimala Sri Dharma Shastra temple, dedicated to Lord Ayyappa, is the most famous and prominent among all the Shastra temples in Kerala. The temple is situated on a hilltop about 3,000 feet above the sea level.
named Sabarimala in Pathanamthitta district, which is unique in many respects. The uniqueness gathers its voice as the temple is open to all, irrespective of caste, color, creed or religion. There is a place near the temple, East Sannidhanam, dedicated to Vavar, who is also called as Babar or Bavar, a Sufi friend of Lord Ayyappa. And that particular place is called as Vavar Nada, an epitome of religious harmony. Another interesting fact is that it is not open throughout the year. It is open for worship only during the days of Mandala Puja, Makaravilakku and Chitra Vishu. It is said that the pilgrims have to follow fasting for 41 days to cleanse their minds before going to Sabarimala. The journey to the temple is to be taken through difficult paths in the forest, as vehicles can go only up to Pampa, which usually works as a parking station as well. This is one of the most ancient temples in Kerala. It's believed that the deity of the temple was consecrated by Lord Parshurama at the foot of Shabri Hills, for which reference has been made even in Ramayana. The temple attracts pilgrims not only from the southern states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh, but also from other parts of the country and even abroad. There is a special place dedicated to Ayyappa's close friend Vavar also, which is called in Malayalam as Vavartara. The deity is Vavar, the friend of Ayyappa and a Sufi saint. He is at the close proximity to the main temple. Ayyappa cult gives much importance for secularism, communal harmony, and has turned out to be a model for the whole world. What we are witnessing here is the preparations for the Ambalapura Petatullal, which has been done as a devotion to the Lord Ayyappa. Here we can see the disciples getting the blessings from all the people. All these legends are associated with the year-long fasting, the continued effort of the 41 days penance. It's closely associated with the Alangat Petatullal as well. It is recorded that is early from the years of 1812 by the British lieutenants Ward and Cornwall that these ceremonies are being conducted at Sabarimala since time immemorial. Only slight changes have been made. The participation have ever increased right from the beginning. But with the same fervor and passion, the devotees are doing the same. The whole city, the whole place, the village wears a festive look during the whole pilgrimage season. Especially a week before Makaravilakku Puja, the most important puja that takes place in Sabarimala Temple. Petatullal is a devotional dance performed by pilgrims. Is an important ritualistic costume of the pilgrimage. The authors of Puranas as well have noted linking mythological stories with historical incidents to convey messages and principles. According to the Puranic view, the Petatullal is
reenactment of joyful dance of people on knowing that Ayyappa had slain the terrible Mahishi. The demon is having the form of she-buffalo. It is believed that the place derived its name Erumeli from the Malayalam word Eruma Kolli. That Eruma means buffalo, she-buffalo in fact, and Kolli means the place of killing. Of course, the slaying of buffalo here has a deeper connotation that eliminating of or transcending the lower mental perfectness of evolution of human consciousness. Mahishi, the she-buffalo, symbolizes the underdeveloped stage of consciousness in animals, with its uncontrolled impulsive trends which still holds a sway over human consciousness as well. According to the historical perspective which is also given in the glimpses of Puranas, this Peddathullal was a part of spiritual discipline evolved by Ayyappa before embarking upon his war expedition against the despotic Udayanan to liberate Sabarimala Temple from his home. It was जैसे मैं आपको बताया था, अय्यप्पा स्वामी शिव भगवान और विष्णु के पुत्र, विष्णु का मोहिनी का रूप देखकर आकृष्ट होकर शिव भगवान में जो पुत्र जन्म हुआ उन्हीं को अय्यप्पा स्वामी कहा जाता है। ये जो पूरी घटना है इसको दो तरह के मंदिरों में बांट दिया गया। एक है अम्बलपुरा मंदिर और दूसरी जो है आलंकाट एरिया। ये अम्बलपुरा मंदिर जो है वो कृष्ण भगवान की मंदिर है। अम्बलपुरा मंदिर में यानी कि कृष्ण भगवान की मंदिर में दोपहर के पूजा पाठ करने के बाद अद्भुत से आसमान पर आपको एक कृष्ण परिंथ यानी कि कृष्ण गरुड़ दिखाई देता है। जैसे भी वो उड़ के आ जाता फौरन शुरू हो जाती वहाँ से सीधा आलंगोट आने के लिए तैयारियाँ। और हर देवल के हर मंदिर के जो घटनाएं हैं उसको एक पेरियोन यानी कि लीडर यानी कि नेता होता है, जिसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक मुख्य कर्मचारी है, जिसको मलयालम में पेरियोन कहा जाता है। समूह पेरियोन, समूह पेरियोन, समूह पेरियोन, सारे समूह का यानी कि जो पुजारी पेट पाठ पढ़ने वाले हैं उनका सबका समूह के सबसे बड़े नेतृत्व देने वाला पेरियोन। इस साल उनका नाम है गोपाला कृष्ण पिल्लाई। गोपाला कृष्ण पिल्लाई पेरियोन के नेतृत्व में वहाँ से अम्बलपुरा मंदिर से निकलकर जो आते हैं वो भी जंगल का रास्ता पार करके बड़ी तकलीफ़ के साथ, और कहा जाता है कि ये जो कृष्ण का जो गरुड़ है वो भी आसमान में इन्हीं के साथ ही साथ उड़ता जा रहा है और सब मिलके आलंकोट के एरिया में आ जाते हैं। और ये तो जाने का मतलब है कि इनको शबरीमला मंदिर के अंदर जाने का है। जाने के रास्ते में आते हैं आलंग गार्डन वाले, उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। നീലിമല കയറി മരക്കൂട്ടത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തസംഘത്തിനെ ബലിസ്വാമി സംഘത്തിനെയും पेरियोन गोपाला कृष्ण पिल्लाई उनके नेतृत्व में जो पूजा पाठ चल रहा है अभी आपको पर्दे पर दिख रहा है। आपको इनके पूजा पाठ करने के बाद इनके आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ से आप तो देख सकते हैं समूह पेरियोन अम्बलपुरा संघम, अम्बलपुरा संघ यानी कि अम्बलपुरा वो जो मंदिर है वहाँ के संघ के वहाँ के नेतृत्व देने वाले गोपाला कृष्ण पिल्लाई समूह पेरियोन कहा जाता है। इनके नेतृत्व में पूजा पाठ करने के बाद वहाँ से निकलेंगे सब मिलके, फिर 18वीं कदम तक चलने के लिए तो करीबन वहाँ से कुछ बोलो कुछ आधा किलोमीटर या 300-400 किलोमीटर 300-400 मीटर का दूरी में है। വഴി ഭഗവാന്റെ ഇതിനിടയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള
സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഗവൺമെൻറ് ആശ്വാസം കാരണം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പിന്നെ വേറെ വരും. അതിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിന് കൊടുക്കാതിരുന്നാലും മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ another area, that is Alangad Petatullal. This is a form of devotion, it's a form of dance performed as part of devotion to Lord Ayyappa. We have seen Ambalapura Petatullal, and now what we're witnessing is the Petatullal of Alangad Sangham. Tullal, it's a form of dance. What we're witnessing are the decorated steps of the devotees. Which is notated even in the Puranas. There is a legend which goes by the same, that it is a dance done by the local villagers. Once Lord Ayyappa has defeated Odenan, who has captured the area in and around Sabarimala and held under his captive. Once his captive is released and Odenan is murdered, the people in the surrounding villages danced in ecstasy. Let us memorize the saying that Petatullal is performed every year in Sabarimala. What we have earlier witnessed is the same dance form performed by Ambalapura Sangham, and here what we are witnessing is the same dance performed by the Alangad Sangham. Let us know now set aside the Puranic story and have a glimpse into the historical aspect. Pandalam was a small kingdom between Chenganur and Adur in southern Kerala. The descendants of the dynasty and the places are still there. According to some of the historians, the kingdom had its beginning around 904 AD, when a scion of the declining Pandya kingdom of Madurai in Tamil Nadu took refuge in Kerala when attacked by the Cholas and established the kingdom of Pandalam. The kingdom of Pandalam, its palace, its prince and crown prince are all associated with the legend of Ayyappa, with the Sabarimala Temple as well. Connecting the historical links mainly derived from the Ayyappa songs, the all Malayalam songs on Ayyappa and lore. It is said that Rajasekhara, the king of Pandalam, who probably lived around 12th century AD, went on a hunting expedition in the deep forests of Sakya ranges. Hearing the cry of his child, the king went in search and saw in a secluded spot a child and a yogi nearby in a deep meditation.
As the king held the crying child in hands, the yogi opened his eyes. He advised the king to take the child to his palace. The childless king was very happy and named his foster son as Ayyappan. It was a period when terrible brigand leader called Odanan had come with his hordes from Tamil regions beyond the borders and dominated the whole fertile regions on the Kerala side of the valley of Sakhya mountain ranges. There used to be a flourishing trade between the Tamil region and the places in those days. The temple of Sabarimala, where Dharmashastra was worshipped from the very ancient past, was on the route along which these merchants had travelled. These traders and pilgrims used to frequent the temple for worship, and they bestowed many valuable as their offerings. In the meanwhile, Odanan and his hordes plundered the temple and killed the priest. The son of the priest escaped. He wandered amidst the mountain regions, awaiting an opportunity to wreak vengeance upon Odanan. They earnestly prayed to Lord Dharmashastra for his son who could be able to fight Odanan and destroying him and to liberate Sabarimala. Their prayer was answered, and the child whom King Rajashekhara took away was one thus born to them on the auspicious Makaravilakku day, when the Malayalam month of Dhanu gives way to the next month, Makaram, around January 14th, 15th. The yogi whom the king saw, at whose advice he took the child to his palace, was the father. It is also pertinent to note that in the Puranic version, Ayyappa is depicted as the son of Lord Vishnu and Lord Shiva, was placed on the banks of Pamba by Devas and was destined to kill Mahishi. The temple was established at Sabarimala as suggested by him. अभी आप जो देख रहे हैं वो है पंदलम के महाराजा के प्रतिनिधि उनके पास से तलवार लेकर जा रहे हैं। उसके पहले उनकी इज्जत से उनका स्वीकार करते हैं। पूरे पूजा पाठ के बाद उनके आशीर्वाद के साथ, पूरी भक्ति के साथ उसको लेकर स्वामी अय्यप्पा का मंदिर तक जाने वाले हैं। अब ये जो देख रहे हैं, पहले जो था अम्बलपुरा एरिया वालों का था, जिसे मैं बताया था उनके पिरियोन थे गोपाल कृष्ण पिल्लई। इसी तरह आलंगाडन के पिरियोन है कुंजू राजप्पन नायर। ये दोनों के नेतृत्व में दोनों तरह से जो घोष यात्रा निकलती है शबरीमला मंदिर तक, जहाँ 18 सीढ़ियाँ होते हैं, उस पूरे सीढ़ियाँ भी सोने से बनाया हुआ है। सोने से बनाए हुए सीढ़ियों के 18वीं सीढ़ी के ऊपर जाकर एक भक्त को दर्शन मिलता है भगवान का। स्वामी अय्यप्पन के दर्शन के लिए 18 सीढ़ी 18 कदम पार करके ऊंचाई तक जाकर पूरी भक्ति के साथ जब दर्शन लेते हैं तो माना जाता है कि वो भक्त जो इस जन्म में और अगले जन्म में या ये पूर्व जन्म में जितने भी गुनाह पाप हैं वो सब माफ़ किया जाता है। अब देख रहे हैं ये जो तलवार है, ये तलवार को पंदलम महाराजा के प्रतिनिधि उन्होंने लेकर जा रहे हैं और उनका नाम है मूलम नायर शंकर वर्मा। मूलम नाल शंकर वर्मा इस साल के पंदलम महाराजा के प्रतिनिधि का नाम है मूलम नाल शंकर वर्मा। उनके हाथ में तलवार देकर वहीं से
Once again, devotees and viewers, let's have a glimpse of idea around what Sabarimala is, which is a Dharma Shastra temple dedicated to Lord Ayyappa. It's the most famous and prominent among all the Shastra temples in Kerala. The temple is situated in a hilltop about 3,000 feet above the sea level in the Pathanamthitta district, which is unique in many respects. The uniqueness gathers its voice as the temple is open to all, irrespective of caste, creed, or religion. There is a place near the temple, East Sannidhanam, dedicated to Vavar, a Sufi friend of Lord Ayyappa, which is called Vavar Nada, which is an epitome of religious harmony. Another interesting fact is that it is not open throughout the year. It is open for worship only during the days of Mandala Puja, Makaravilakku and Chitravishu. It is said that the pilgrims have to follow fasting for 41 days to cleanse their mind before going to Sabarimala. The journey to the temple is taken through difficult paths in the forest, as the vehicles can go only up to the pampa, which acts as a parking station as well. This is one of the most ancient temples in it. It is believed that the deity of the temple was consecrated by Lord Parshurama at the foot of Shabri Hills, for which references has even been made in Ramayana. The temple attracts pilgrims we are witnessing here the procession taken from the Pandalam Palace, the ornaments to be adored in the mountain lot, Lord Ayyappa, on the auspicious day of Makara Sankranti, which is also a boon given exclusively to his father, his foster father by Lord Ayyappa, as legends are to be believed, that once in every year his foster father is given a permission to step the mountains to meet Lord Ayyappa, who is sitting inside the shrine, and to adorn him with all these ornaments, gold and others, which were kept by the king in order to adorn on his son when he takes over the charge as the king of the land from his foster father. Against his wish, Lord Ayyappa decided to step up and go to the hills, the mountains, and to sit there in meditation. अभी आप जो देख रहे हैं वो है भगवान के लिए लेके जाने वाले घोषणाओं का, यानी कि ज़ेवरात के, सोने के गहनों का वो जो संदूक है, 3 संदूक भरकर सोने के गहने जो भगवान के ऊपर डालने के हैं, जो भगवान को पहनाने के हैं, उसको बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी आदर के साथ भक्त लोग अपने सिर पर रखकर बड़ी इज्जत के साथ नृत्य करते हुए वहाँ से लेकर जाएंगे वो। उसके बाद जब वो सबरीमाला पहुँचेंगे तो इस आभरणों से, इस गहनों से, इस पूजित गहनों के साथ, सोने के मालाओं के साथ भगवान को सजाया जाएगा और उसका दर्शन भी आम लोगों को, भक्तों को दिया जाता है। अब जो देख रहे हैं आप, वो लेकर जा रहे हैं उस तरफ में दोनों तरह के लोग भी हैं, जैसे कि अम्बलपुरा वाले भी हैं, उसके साथ ही साथ आलंगोट वाले भी हैं।
अम्बलपुरा के जो नेता हैं वो भी इनके साथ है और आलंगकोट के नेता भी है। दोनों मिलकर बड़ी शान से, बड़ी हिफाजती के साथ, बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी एकदम भक्ति के साथ ये जो ठीक तरह से लेके जा रहे हैं। उसके बाद जब पहुंचेंगे सन्निधान तो वहाँ इस भगवान के ऊपर इसको पहनाए जाएंगे। अभी जो पंडलम के ये जो गहना है उसमें ख़ास तरफ से होते हैं तलवार, ताज, कमरपट्टी, नवरत्न के हंगोटियाँ वगैरह वगैरह। और उसमें आलंगोट वाले तो सफ़ेद कपड़ों से भी और अम्बलपुरा वाले काले कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो दोनों के आपस में फ़र्क रखने के लिए दो रंग के कपड़े आप देख रहे हैं कि आलंगोट वाले सफ़ेद कपड़ों में आ रहे हैं और उधर जब देखेंगे तो काला यानी कि सैफरॉन कलर, दोनों कलर भी दूसरे अम्बलपुरा वाले इस्तेमाल करते हैं। अब इनको पल्लक में बिठाकर लेके जा रहे हैं। पल्लक में इनको लेकर जाएंगे उधर। उसके बाद पूजा पाठ के बाद गहनों आभरणों का पहना जाएंगे भगवान की मूर्ति के ऊपर। आप देख सकते हैं चारों तरफ घने जंगलें हैं। तो जंगल के बीच का रास्ते से, जंगल के बीच के रास्ते से बड़ी मुश्किल से था, लेकिन एकदम भक्ति के साथ ये जो लोग हैं, जो भक्त लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा कोविड के वजह से So we are witnessing here the preparations of the Mandala Puja or the Makaravilakku. The pilgrimage to Sabarimala begins from the 1st of Vrichikam, a Malayalam month coming in the middle of November, probably between 14th to 17th, the most important day for Ayyappan and Makarasankranti day. This day will usually fall between January 14th and 16th. On Makara Sankranti, every year without fail, sacred events occur. Firstly, as the jewels, the Tiruvabharanam of Lord are transported from the old Pandalam palace to Sabarimala. A holy Garuda, an eagle, the vehicle of Lord Vishnu, circles above the precious jewels, in fact guarding them like a protector. This rare eagle is rarely seen in the midst of people for a long period of time. Yet, the auspicious bird follows the Tiruvabharanam procession, finally circling above the Sannidhanam at Sabarimala 9 times as it pays its respects to Lord Ayyappa. During this time, there is not a single star in the sky except for a special star. As the beautiful jewels are placed on the golden body of Lord within the temple, several hundred thousands devotees outside crammed into any available free space. That's what we are about to witness, and they chant Swami Sharanamayappa. But apart from the previous years, certain COVID protocols are in place. When the jewels are finally all adorned on the Lord, the star in the sky miraculously disappears. Within moments of the Lord being adorned with the Tiruvabharanam, an effulgence appears in the opposite of the hills of the Sabarimala, shining 3 times.
ശബരിമലയിൽപ്പെട്ടതുള്ളത് മുതൽ തന്നെ ശബരിമലയിൽ സംവിധാനവും സന്നിധാനവും നിലയ്ക്കൽ പമ്പ തുടങ്ങി ഇടത്താവളങ്ങളും ഇടയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശരണഘോഷങ്ങളാൽ ശബരിമല മുഖരിതമാണ്. പതിനായിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ മകരജ്യോതി ദർശനത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 6:30 മുന്ന് 18-ാം പടി കയറി ശ്രീകോവിലിന് സമീപത്തെത്തുമ്പോൾ we're witnessing Brahmasri Parameshwaran Nambudri, the Melchandi of Sabarimala, who is explaining the events which have already happened and which are about to happen. He was mentioning that he was glad to see millions of the devotees of Ayyappa in and around the Sannidhanam, and also those who are watching it from around the world. And is expecting the miraculous stars and the Divya Jyoti to appear in the skies, and the events to be passed miraculously and peacefully. And is seeking the cooperation of every devotees, the policemen and all, as well as the divine intervention of the Lord to peacefully conduct the ceremonies. മറ്റ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത് കാണാവുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്കും മകരജ്യോതി ആശംസകൾ നേർന്നു. എല്ലാവരെയും കലിയുഗവരനായ ശ്രീധർമ്മശാസ്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. संविधान को आप देख रहे हैं। 18 सोने की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर जो दर्शन के लिए भक्त जाते हैं, और वहाँ सब सख्त तरह से रक्षा का प्रबंध किया गया है। केरला की पुलिस के साथ ही केंद्र सरकार की रैपिड एक्शन फोर्स भी आ जाती है, और कोविड प्रोटोकॉल के वजह से लोगों को जितनी भी तकलीफ है उसको ना परवाह किए हुए लोग अपने आप को संभाल कर, अपने आप कोविड प्रोटोकॉल को मानकर पूरी सहगारी के साथ मास्क पहनते हुए जितना हो सके उतना कोशिश करके कोविड प्रोटोकॉल पालन करते हुए वो लोग दर्शन के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर घने जंगल में और ऊंचे पहाड़ों के बीच में ये जो मंदिर है, ये मंदिर में दर्शन के लिए साल में एक बार जो मंडल पूजा के टाइम से, यानी कि करीबन अंग्रेजी का महीना नवंबर में पड़ता है, वो नवंबर उसके बाद मकरविलक्कु तक, यानी कि करीबन जुलाई, आज जो है जनवरी 14 तारीख है, बोले और एक 3-4 दिन के बाद बंद किया जाएगा। तो साल में एक बार ही आपको यहाँ का मंदिर का अंदर दर्शन लेने के लिए जो दरवाजे हैं खुले जाएंगे। तो ये 3-3.5 महीने तक दुनिया, हिंदुस्तान के कोने कोने से, जैसे पास का जो राज्य है तमिलनाडु, दूसरा राज्य जो कर्नाटका है, आंध्रा है, जो भी है, और नॉर्थ इंडिया जो है, तो उत्तर भारत से भी यहाँ बहुत से भक्त लोग आ जाते हैं। लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी भक्त लोग पूरी तरह से अपना प्रोटोकॉल निभाते हुए दर्शन के लिए आए हैं, और इसके साथ यहाँ के पुलिस और यहाँ के अधिकारियों ने पूरी सुविधाएं दिए हैं कि भक्तों के लिए पूरी हिफाजत हो और उनको आसानी से बिना कोई तकलीफ के दर्शन करके वापस जा सके। अभी आप जब देख रहे थे ब्रह्मश्री परमेश्वर नंबूदरी जो प्रथम पुजारी है शबरीमला के प्रथम पुजारी है, वो उनका नाम है ब्रह्मश्री परमेश्वर नंबूदरी। उनको मलयालम में मेल शांति कहा जाता है। ये प्रथम पुजारी ने अभी आशंसा दी थी, सबको शुभकामनाएं दी थी इस साल का शबरीमला दर्शन का।
Till about 50 years ago, the pilgrimage to Sri Dharmashastra or the Sri Ayyappa temple at Sabarimala was mostly confined to the people of the old Travancore state of South India. The road transport and the rail facilities were then very limited. With their hearts surging with devotion, the pilgrims in the group wearing blue or black clothes and carrying on their heads Hirumudiketta, the package of offerings and provisions used to trek long distance in groups to reach the shrine of Lord Ayyappa. The roads are all covered with small towns, villages and long stretches of mountainous terrain, of dense forests inhabited by mostly wild animals. In those days, the maximum number of pilgrims reaching Sabarimala in any peak was a season only about 15,000. Today, the scene is drastically different. The latest estimate of their number is around 50 million. The number is steadily increasing year after year. What we are witnessing here is a Pamba Sadhya. Which is offering to Lord Ganapati as well. Which is not done in Sannidhanam, but this is an occasion where the Lord Ganpati, Lord Ganesh, is offered with the sadhya. The devotees have the food, share the same, seek the blessings of Lord Ganpati before going for the arduous task of climbing the hills. The devotion unlimited, otherwise devotion unplugged. The people here are all with devotion and ecstasy dances away their tears. Undertake the task of climbing the mountainous terrains, neglecting the wild animals and their threats, and finally reaches the Sannidhanam to seek blessings of their favorite Lord. There exist diverse theories and views about Sri Ayyappa and his worship. Most of them dwell elaborately on the legends or historical aspects. There is no breadth of intellectual discussion on whether Sri Ayyappa is Aryan or Dravidian god, whether his form and the pilgrimage have a Hindu or Buddhist origin, whether he is a historical figure or not, and the debate, what gets neglected is the most vital, the underlying spiritual wisdom. What attracts millions to this vibrant center of divine power is neither mythological stories or historical importance, but the very personal experience of spiritual solace and harmony. In historical assessment, what is overlooked is its very essence, the blending of many positive aspects of religious concepts and spiritual disciplines that gives a broad-based practical impetus to the striving of man to know himself and to find a greater meaning to his life. The legendary and historical aspects, of course, is important, but what is more important is the personal experience of spiritual solace and harmony. I can exemplify a temple legend. A group of pilgrims from Tamil Nadu on their way to Sabarimala reached Kollur, a beautiful and calm village nestled amidst the mountains, fastnesses in Karnataka, to offer worship to the Divine Mother at the reputed Sri Mukambika Temple. This group, said to be about 25 devotees, after taking bath in the holy river Saupanika, stood in rows on the bank. Their age might have been ranged from 7 to 70. There were sons and fathers, uncles and nephews, and even grandfathers. From the right end, a devotee left the row and with folded hands worshipfully prostrated before each one and took his position at the left end. This continued till each one is offered a salutation to everyone else. Grandfather fell at the feet of his grandson, father before the son, teacher before the student, and vice versa. True to the principles of Sri Dharmashastra worship,
They were taking a practical training in Advaitic wisdom, the philosophy of basic spiritual oneness, by symbolizing, negating all differentiations and recognizing the harmony of the spiritual supreme divinity in everyone and trying to identify themselves with the transcendental reality. It's a training to develop the awareness that everything, the river, the forest, trees, man, bees and everything are that, which identify with the name Lord Ayyappa, which goes by the same Tattvamasi. സുഗമമായിട്ട് അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് സമയം പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 6:30 സമയമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം പാർട്ടിയുള്ള ദീപാരാധനയുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം ജോലി ദർശനം സ്വാമിമാർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഈ സമയത്തില്ല ഇവിടെ കൃത്യമുള്ള സ്വാമിമാരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ മകരവിളക്ക് കാലത്ത് വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുണ്യ സീസൺ കാലം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് മഹാമാരി ആദ്യം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി അത് വീണ്ടും വളരെ കൂടിയൊരു അവസ്ഥയിൽ V. Krishna Kumar Warrior, the Executive Officer of Sabarimala. ദർശനത്തിനുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവർക്ക് വേണ്ട സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും സുഗമമായ ദർശനത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനത്തിലാണെങ്കിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരുടെ വലിയൊരു നിര കൂട്ടമാണ് നിറഞ്ഞ ശരണവിളികളോടുകൂടിയും ഭജനയോടുകൂടിയും ജ്യോതി ദർശനത്തിനും തിരുവാഭരണ ദർശനത്തിനുമായി. What he says is that all arrangements are being made to smoothly conduct this Makaravilakku Festival, taking care of the COVID protocols as well. പരമാവധി മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ, പിന്നെ കായത്തൊക്കെ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് മാറ്റാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കായത്തം കയറി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഒരുമിച്ചല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു കിലോമീറ്ററുകൾ നീണ്ട യാത്രയാണല്ലോ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ മാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് സാനിറ്റൈസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് പരമാവധി അന്വേഷണമൊക്കെ നടത്തി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കോവിഡ് കണക്ക്, ഇവിടെ ടെസ്റ്റുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കോവിഡ് കണക്ക് ഒന്നുമില്ല. കാര്യമായിട്ടൊരു വർധന നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു. വീക്കെൻഡായിട്ട് കണക്ക് പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. പരിശോധന നടത്തിയത് കാര്യമായ വർധനകൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ നമ്മൾ സേഫാണെന്നുള്ളതാണ്. കുറേ സുരക്ഷിതമായ ദർശനമായിരുന്നു സീസൺ. ഘോഷയാത്രയ്ക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കും. अब ये सबरीमला का जो उत्सव चल रहा है उसके पीछे बहुत से ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, जिसमें से मैं जैसे आपको बताया था कि शिव और विष्णु के जन्म लेने के कारण इन्हें हरिहरा पुत्र भी माना जाता है। भगवान शिव और विष्णु से जन्म लेने के कारण सबरीमला स्वामी को हरिहरा पुत्र माना जाता है। अभी आपको दिखाया गया टीवी के स्क्रीन पर यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री कृष्णा कुमार वारियर वो बता रहे थे कि इस बार भी हर साल की तरह लोग बड़ी जोश के साथ आए हैं, बड़ी भक्ति के साथ आए हैं। कोविड होने के बावजूद भी पूरे कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए पब्लिक, ये जो भक्त लोग जो आए हैं पूरी तरह से वो कोऑपरेट करते हैं सहकारियों के साथ, उनके साथ एकदम अच्छी तरह से मिलन के साथ। और पुलिस भी इतनी मेहनत के साथ कोशिश कर रही है कि कहीं सबरीमला आके वापस जाने के बाद किसी को कुछ गड़बड़ ना हो, इसकी बहुत कड़ी तरह से निगहबानी करके मनाया जा रहा है। और ये ख़ास बात इसमें है कि सबरीमला में औरतों को 10 साल के ऊपर और 50 साल तक है सो औरतों को आना मना है।
We are witnessing here the ceremony of Makaravilakku, which is usually a devotional practice performed in respect to Lord Ayyappa as well as Ganesha, which happens at Pamba, the foot of the hills from where the artist's journey to Sannidhanam starts. We can see the lambs floating in the river and mostly in the banks of the river, in and around the steps as well. Lakhs of such lamps are lit, which is a feast to eyes, especially a believer's eyes. All symbolize the glory of goodness, oneness, Tattva-masi, devotion and goodness. We are getting the visuals of various types of lamps lit in the banks of the river Pamba. Visuals of the adjoining hills of Sabarimala. From here, on top of the buildings, people are eagerly waiting to witness Makaravilakku, the miraculous light which appears from Punnambalame.
धार्मिक किताबों के मुताबिक समुद्र मदन के दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहित रूप पर आकृष्ट होकर इसके प्रभाव से जो बच्चे का जन्म हुआ था उन्हें पंबा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। इस दौरान राजा राजशेखर ने इन्हें बड़े बहुत सालों तक पाल पोस के बड़ा किया। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लेने जंगल में गए अयप्पा ने वहां पर राक्षसी महिषी का वध भी किया। और उसके बाद आज भी यहाँ हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर 15 राजा महल से अयप्पा के आभूषणों को संदूकों में लेकर एक दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। What we're witnessing here is a procession entering the Ambalapura Temple, which is in association with the Ambalapura Pettathullal. With Pettathullal, that is it's a devotional dance performed by the pilgrims in Sabarimala. It's an important ritualistic custom of pilgrimage. The authors of the Puranas as well have noted linked mythological stories with the historical incidents to convey messages and principles. According to the Puranic view, the Pettathullal is a re-enunciation of joyful dance of the people on knowing that Ayyappa had slain the terrible Mahishi, a demoness having the form of a she buffalo. It is believed that the place derived its name from Erumeli, that is, the place of Erumeli derived its name from the Malayalam word Erumakolli. Eruma means she buffalo and Kolli, the place of killing. That is in order to commemorate such events that this Pettathullal is performed. As two sections, Ambalapura and Alanga, we are witnessing the Pettathullal, the transformed from Ambalapura Sankam. According to the historical perspective, it is also given in many books, even the Puranas, that the Pettathullal was a part of spiritual discipline evolved by Ayyappa before embarking upon his war expedition against the despotic Udayanan to liberate Sabarimala Temple from his hold. It was intended to raise a sense of all social and religious distinctions from the minds of the participants and to integrate them in the dynamic whole. All of them wore blue or black clothes and smeared their faces with charcoal and other colors. They danced in abandon in a state of forgetfulness of their individual distinctions while making a conscious effort to fix their attention on the divinity of Allah, for they consider it as a manifestation of supreme reality. While dancing and moving along with the procession, they utter the sound Swami Tindagatom, Ayyappa Tindagatom, which is chanted even today by the dancing couples. इसी तरह इस मंदिर के पास आज आप जो देख रहे हैं मकरविलक्कु जो होने वाला है, इसका मतलब ऐसा होता है कि इस दिन यहाँ एक निराली घटना होती है। घनी पहाड़ियों के कंदमाला छोटी असाधारण चमक वाली एक ज्योति दिखाई देती है। इस ज्योति घटना को ही मकर ज्योति कहा जाता है। मकर संक्रांति और उत्तर फल्गुनी नक्षत्र के संयोग के दिन पंचमी तिथि और वृश्चिक लगने के समय ही अब आप जो देख रहे हैं वो है अम्बलपुरा पेटा। अब ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं वो है वावर मस्जिद। ये जो सबरीमला है, इसके इतिहास में एक बहुत बड़ी सामुदायिक मैत्री भी है। बरसों पहले यानी कि 5,000 साल पहले भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता निभाने के लिए, मिलावट रखने के लिए यहाँ एक सामुदायिक मैत्री का उदाहरण भी आता है। जैसे कि जब
स्वामी अय्यप्पन वहाँ बाबर जो भी हो, वहाँ के वो तो एक जंगल के लुटेरे थे जो हर आदमी पर हमला करते थे। एक बार स्वामी का इनके साथ टक्कर हुआ और टक्कर होने के बाद इनके आपस में ऐसी दोस्ती होगी कि वावर स्वामी जो है उन्होंने उनके पूरे बुरे काम छोड़कर स्वामी के पास मिल गए और अय्यप्पा स्वामी वावर स्वामी दोनों मिलकर वहाँ राज करने लगे। उसके बाद भी जितने भी लोग हमला करने आए थे, जैसे कि उदयन आए थे एक बार हमला करने के लिए, तब भी इन दोनों ने मिलकर उनको हरा के भेज दिया था। और इस तरह अय्यप्पा स्वामी कहते थे कि वावर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना, बस मेरे ही पास रह रहोगे। उनके दाएं तरफ एक मस्जिद बना गई जो वावर मस्जिद, नैना मस्जिद कहा जाता है उसको। वो वावर मस्जिद स्क्रीन में देखे थे आप, वो वावर मस्जिद में भी ये अय्यप्पा ये जो मंदिर का फेस्टिवल जो है, ये जो त्यौहार चल रहा है, इसके अंदर ये मस्जिद के लोग भी शामिल होते हैं। तो भारत का ये एक ऊंचा इतिहास, एक भारत की एक ऊंची संस्कृति और हिंदू मुसलमान की जो मैत्री, सामुदायिक मैत्री, अनेकता में एकतापन, भारत का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो कहते हैं अंग्रेजी में, अनेकता में एकतापन, इसका एक उत्तम उदाहरण भी होता है इस सबरीमला के उत्सव में। और अब ये हाथी के ऊपर भगवान हाथी के ऊपर जो भगवान का स्तंभ यानी कि दर्शन करने के वाले जो हैं उसको लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की ओर, वो आगे अंदर जा रहा है। वक्त बीत रहा है और अब थोड़ी देर में मगर जोड़ी होने वाली है। इसके इंतज़ार के साथ पूरे भक्त लोग आके खड़े हुए हैं। वो ऐसा होता है कि थोड़ी देर के बाद जब अंधारा होगा तो अचानक से आसमान पर एक ज्योति दिखाई देगी जिसको मगर ज्योति कहा जाता है। इसके इंतज़ार में पूरे भक्त लोग ऐसे खड़े हुए हैं। आज का इस साल का ये सबरीमला का जो उत्सव है, जो त्यौहार है, ख़त्म होने का आखिरी वक्त है और बड़ी ही बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं भक्त लोग दर्शन के लिए और मगर ज्योति का दर्शन के लिए। माना जाता है कि ज्योति का दर्शन करने के बाद इनके ज़िंदगी में एक इतना उजाला आ जाता कि अगले आने वाले साल में, आने वाली ज़िंदगी में इनको हर काम करने के लिए एक स्पेशल ताकत, जो हिम्मत, जो दिलेरी और जो हिम्मत चाहिए, वो सब भगवान ने इनको अंदर दे देता है। इस मंदिर के पास घने जंगलों के अंदरों में बीच पहाड़ियों के ऊपर एक ज्योति अभी थोड़ी देर में दिखाई देने वाली है
और इसके इंतज़ार में भक्त लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स वाले सब मिलकर बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ हिफाजत कर रहे हैं। और पब्लिक भी, यानी कि जो भी भक्त लोग आए हैं, बहुत ही होशियारी के साथ पूरे प्रोटोकॉल को मानते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को दिल में रखते हुए हिफाजती के साथ दर्शन करके जाने वाले हैं। 15 नवंबर मंडल और 14 जनवरी के ये मगरविलक्कु शबरीमला का प्रमुख उत्सव, ये 3 महीने के करीबन का वक्त जो है मलयालम पंजाब के पहले 40 दिन के अंदर और विशुद्ध महायानी अप्रैल में इस मंदिर के पेड़ वाले जाते हैं। We are witnessing the different areas to which the procession carrying the ornaments, the Tiruvabharanam, which is to be adorned on the Lord, visiting. What we are witnessing here is the different stages of procession undertaken from the old Pantalam Palace en route to Sannidhanam. These are the ornaments to be adorned on the mountain Lord of India, Lord Ayyappa. Several devotees carry the ornaments on their shoulders and walk through the hills and the roads barefooted, carrying them till the Sannidhanam, where the priest adorns these ornaments onto the Lord, the idol of the Lord. En route to Sannidhanam from the old Pantalam Palace, this procession visits several temples, and one among such visit has been shown on your screen right now. Along the path of this procession, where this Tiruvabharanam is carried by barefooted devotees, lakhs of people assembled on both sides of the road to have a glimpse of the same. This is a much decorated event which goes on, which continues without losing its fervor, its ecstasy and devotion for centuries from now. Also, it's surprising to see that even the current situation of the rapid spreading COVID infection has not deterred the devotees from attending these events and making it colorful, devotionful and successful. These are the ornaments being carried. These are the scenes of the ornaments being carried. These are recorded events. These are the ornaments being carried, accompanied by the security forces of the Kerala police. Every arrangements have made on the road to see that everything falls in place at the right time. The visits of Tiruvabharanam to different temples is in fact a respite for those who are carrying them for kilometers and kilometers.
जो आभरणों की घोष यात्रा जो रास्ते में जा रही है, तो दोनों तरफ लोग इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं उसका दर्शन करने के लिए और आदर करने के लिए। कई लोग फूलों की माला पहनाकर भक्ति के साथ उन आभरणों की, उन गहनों की इज्जत करते हैं और उसके बाद जब वो आभरण सन्निधान तक पहुंच जाते हैं तो बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी भक्ति के साथ उसको लेकर रखने के बाद वहाँ एक पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद सावधान से इस पूरे सोने के गहनों को अंदर लेके जाकर भगवान पर, अभी आप जो देख रहे हैं वो है सन्निधान के उधर पूरी तरह से इंतज़ार हो रहा है मगर ज्योति के लिए। अभी तो सूरज ढलने वाली है, अंधारा हो रहा है, थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा, एकदम अंधारा हो जाएगा। तो अचानक से एक चमत्कार की तरह मगर ज्योति आपको दिखाई देगा। इसके लिए पूरे इंतज़ार के साथ लोग खड़े हुए हैं। आपको सिक्योरिटी वालों का जो हवाई जहाज़ जो छोटी है वो भी आसमान पे घूम रही है। हर तरह से पुलिस और पब्लिक दोनों मिलजुल कर अच्छी तरह से पूरा प्रोटोकॉल भी निभाते हुए हिफाजती के साथ ये साल का भी सबरीमला का ये जो त्यौहार है इसको बड़ी शान से और बड़ी भक्ति के साथ, इज़्ज़त के साथ मना रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मगर ज्योति के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से 3-4 दिन के बाद, आज के बाद करीबन 4 दिन के बाद वहाँ के दरवाजे बंद हो जाएंगे और बस फिर अगले साल ही दरवाज़ा खोला जाएगा पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, दर्शन के लिए। തിരുവാഭരണ ദർശനവും മറ്റും നടക്കുന്ന ഇന്ന് ദൂരദർശൻ്റെ ലൈവ് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണി മുതലാണ് ഇത്. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഭക്തജനങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ദർശനവും അനുഗ്രഹവും ഇതിലൂടെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. What is special about Sabarimala is one thing, that is the forest route. Pilgrims going through the forest route are comparatively less during the first phase of the pilgrim season, that is during the Mandala Puja season. But during the Maha Sankrama, the Maha Makar Sankrama, the phase begins from the 1st January. A large number of pilgrims go through this route. Till about 2 decades ago, the pilgrims taking the forest route used to step directly into the forest immediately after Edumili. But now, they are supposed to walk at least 4 kilometers to the public roads before entering the forest. On the way, there is a broad stream called Peruntodu, once considered the boundary that separated the inhabited land from the forest. But now the villages extend from here up to a place called Irumponikara, that is 3 kilometers eastward. At Irumponikara, there are 3 temples dedicated to Lord Shiva,
one to Lord Subramanya and Goddess Balabhadra Devi. Immediately after this blaze, that is Irumpulikara, the pilgrims enter dense tropical forest. Many prefer to walk barefoot through the holy mountain ridges considered to be the Pungavanam, the blooming grove of Lord Ayyappa. After a walk of about 3 kilometers, crossing some of the gentle forest streams, the pilgrims reaches a place of rest known as Arashamudi Kotta, where it is believed that Ayyappa and his soldiers took rest for some time. It is a place of worship of the guardian deities of the forest, and there is a small shrine for them. Then the pilgrims proceed ahead through a forest path that lies along the side of the river called Paratur, the crystal clear water of which frisks and roll out about amidst the rocks. It's an ideal place for a refreshing cool bath. The auspicious phenomenon of appearance of Krishna Paranda occurs on some of the special occasions, like just before the procession carrying Tiruvabharanam, the special ornaments of the Lord, which starts from Pantalam Palace, and also when the procession reaches Sharamkutiyal, a sacred spot near Sabarimala Temple. These occurrences, as if programmed, take place every year, can be regarded as nature's clues reminding man of the all-pervading reality behind all phenomena. Such events serve to remind him of the greater dimensions in nature beyond what he knows in his ordinary conditioned state. However, more than such super-rational incidents, it is very intimacy with the inner divinity which the pilgrimage provides that draws millions to Sabarimala. During the pilgrimage season, Erumili witnesses memorable scenes of abounding devotion, color and festivity. Thousands of pilgrims on reaching here either proceed to Pampa by vehicles or take to the forest route by foot to reach there. In Erumili, near Valiyampalam, there is a camp of Akila Bharat Ayyappa Seva Sangham, a well-known voluntary organization which renders considerable service to pilgrims. A place associated Arita was on the bank of a river known by the same name. About 2.5 kilometers from Kalaketi is another major resting place of pilgrims. From Kalaketi to Arita, it is a mid-forest village scene, and between the two places there is a tarred road instead of the usual rugged forest path. The river Arita is a tributary of river Pampa. Many of the pilgrims camp at this place during night, and there are a number of temporary sheds that provide accommodation. In Arita, there is a temple complex of various deities. A special ritualistic ceremony performed here is Ari Puja, which is a prayerful walking around a huge pile of fire chanting aloud Swami Sharnamayappa. During the Makara Sankrama season, especially after the 1st January, Arita and surrounding areas become a scene of constant movement of millions of pilgrims. The holy bath in the river Arita is a part of the pilgrimage. While making a dip, the pilgrim, as a ritualistic custom, takes a pebble from the river which he later drops on reaching the place called Kaladikul, which literally means a hill where the stone is dropped. Everyone are eagerly waiting for the Makaravilakku to appear in the skies. We're witnessing the scene inside the Sannidhanam. The cameramen of Doordarshan and the associated officers are working tirelessly to bring you these wonderful, these blissful visual records from Sannidhanam and Pampa.
ये हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति का एक ऊंचा प्रतीक है। इधर सामुदायिक मैत्री और एकतापन का 5000 साल पुराना ये उदाहरण आज भी भारत के संस्कृति के ऊपर इज्जत के साथ बहुत बड़ी शान के साथ नाम लिया जाता है। अय्यप्पा स्वामी मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, फिर भी सिर्फ हिंदुओं ही नहीं, मुसलमान हो या ईसाई हो, जो भी हो, सब बड़ी भक्ति के साथ साल में एक बार इधर आकर दर्शन लेके जाते हैं। ये सबरीमला शैव और वैष्णव के बीच एक अद्भुत कड़ी भी है। पश्चिम घाटी में पहाड़ियों के श्रृंखला सह्याद्री के बीच में स्थित ये अंबल, ये जो अय्यप्पा स्वामी की जो मंदिर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दुर्घटनाओं से पार करना पड़ता है। जंगल के घड़े घड़े बहुत गहने रास्ते और कई तरह के जानवरों के बीच में से। आजकल तो सुविधाएं बहुत बढ़ गई, जाना आना तो आसान हो गया, फिर भी जो लोग पूरी कोशिश करके पूरी हिम्मत के साथ करते हैं तो वो एक 40 दिन का व्रत अनुष्ठ करके नंगे पैर पैदल जाते हैं, अपने घर से पैदल निकलकर वहाँ तक अय्यप्पा स्वामी के पास 18वीं सीढ़ी के ऊपर तक जाकर स्वामी का दर्शन करके उनका We are witnessing the preparations for the much decorated Pamba Sadhya, which happens every year in the banks of river Pamba, near the temple of Lord Ganesh. It's an offering to the Lord. Along with the Lord, there is a feast where millions of devotees attend. We are witnessing the scenes from there. They have this food with much devotion and pleasure. The devotees see this as an instance of blessing. ये पंबा नदी के तट पर आखिर में एक समूह भोजन मनाया जाता है, इसको पंबा सद्या कहा जाता है। वो समूह भोजन के बाद सब लोग आकर इकट्ठा हो जाते हैं मगर संक्रांति के लिए। वो जो मगर ज्योति जो आसमान में दिखाई देगी उसके लिए बड़ी इंतज़ार के साथ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं मंदिर के पास बड़ी बेचैनी के साथ भक्त लोग पूरी प्रतीक्षा लेके खड़े हुए हैं। जब भक्त लोग वापस जाएंगे तो वो यहाँ से प्रसाद भी लेके जाएंगे। उनके लिए प्रसाद जो है उसको अरवाना कहा जाता है। गाय के दूध से निकाला हुआ शुद्ध गाय का घी से बनाया हुआ इस अरवाना यानी कि खीर जो है ये प्रसाद के रूप में वहाँ के पूजा पाठ के बाद जो भक्तों के लिए आजकल गवर्नमेंट इसको पैक करके बड़ी हिफाजत के साथ देवस्थान वाले दे रहे हैं।
उसको भी लेके जाएंगे प्रसाद के साथ अपने अपने घर को। उसके लिए बड़ी इंतज़ार से भक्त लोग खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर में मगर ज्योति दिखाई देगी। आप जो देखते हैं पर्दे पर सोने से गहने बनाए हुए पूरे भगवान के मूर्तियां हैं और From the British records, we can have some interesting facts. That is, in 1812, the British Lieutenants Ward and Connor says on January 12, about 10 to 15,000 people from the most remote parts of India visited Sabarimala. I am referring to the memoir of the Survey of Travancore and Cochin States, page number 136. It is very pertinent to note that when India's population was in millions, in 1812, when steam engine, car, train was not even thought of, people came by walking from the remote parts of India. The usage is interesting as it is not Travancore or Kerala or the Madras Presidency or South India, but the usage in the memoir was India. Many of the renowned film actors and celebrities are here. The procession from the Pandalam Palace is about to reach Sannidhanam, which has almost reached Sannidhanam, and it is carrying all those blessed ornaments of Lord Ayyappa, and it is about to step into the 18 holy footsteps. Now that this is a most important and auspicious moment for all the devotees waiting for this to happen, that the procession, the Tiruvabharanam procession, the team is slowly arriving at the scene at Sannidhanam. The preparations are being largely made. Everyone is eagerly waiting for the Makaravilakku to happen, which is also called as the Makaravilakku. Makaravilakku is a star that rises in the horizon, which is a Rudra Nakshatram, or the Westerners call it as sideways. In Latin, sideways means Jyoti, that is a flickering light. Makaravilakku, on the other hand, is a symbolic Deeparatana. In a place called Ponnambalamede, where Malayarayas, the tribal Vanavasis, Adivasis, used to do Deeparatana. Now the tradition is continued.
There is a striking difference between Makaravilakku and Makaravilakku. Where Makaravilakku is a star that rises on the horizon. The Western is called as Sirius. In Latin, Sirius means Jyoti or a flickering light. Makaravilakku, on the other hand, is a symbolic Deeparatna in a place called Panambalameda, where Malayaraya tribal Vanavasis, Adivasis used to do Deeparatna, and now the tradition is handed over and continued. The ornaments of Lord Ayyappa is about to reach the 18 feet, about to scale the 18 feet, and it is in the vicinity of the holy steps. You can see the policemen also accompanying the same. They are also garlanded. They also take part in this devotional scene. They are also part and parcel of all these happenings. We can see men carrying the ornaments to be adorned on the Lord. They're being held by people surrounding them. But remember, they've been carrying this for hundreds of kilometers, right from the old Pantalam Palace, barefooted on the top of their head. The final folding of events is happening here, which needs no description as well. A moment of silence for those blissful devotees to enjoy and devote themselves to this colorful, wonderful and devotionful happenings. Procession, people paving the way, and the procession is moving on. The people carrying the ornaments have been guided to the temple. What is unique devotion? This happening every year. Millions of devotees attend. They were patiently waiting to get a glimpse of the same, and if possible to have a touch. The bolt which they consider as sacred, the bolt which carries the sacred ornament,
they regard it as blissful. अब जो देख रहे हैं अपने पर्दे पर, पंदलम राजा के महल से जो भगवान के आभूषण हैं, सोने के जो गहने हैं, उसको बड़ी भक्ति के साथ सिर पर रखकर लेके ला रहे हैं। वो जो घोष यात्रा मंदिर के अंदर आ रही है तो बड़ी उत्साह के साथ भक्त लोग उसका आदर के साथ उसका स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद पूजा पाठ के बाद उस गहनों को भगवान की मूर्ति पर पहनाया जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से आभूषणों से भरे हुए भगवान का दर्शन भक्त लोगों को लिए दिया जाएगा। उस दर्शन के लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और इस दर्शन के बाद मगर ज्योति का भी दर्शन करने के बाद ही भक्त लोग वापस जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सिर पर रखकर गहनों को, सोने के गहनों को जो भगवान के मूर्ति के ऊपर सजाना है, चढ़ाना है, इसको लेके ला रहे हैं। बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी हिफाजती के साथ गहनों को ले रहे हैं। अंदर पुजारी के पास गहनों को संदाख अंदर देंगे। अभी पुजारी पूछ पाठ करने के बाद भगवान को पूरे सोने के गहनों पिनान को आघोषित करने के बाद दर्शन देंगे।
What we witness here is the procession that has started from the old Pantalam Palace has reached at the part of the Mountain Lord of India, that it has reached the Sannidhanam, and the ornaments are being adorned on the Lord. Everyone is eagerly waiting, every devotees are eagerly waiting for the moment when the temple doors are opened to have a glimpse of the same that is about to happen right here. Makaravilakku, which culminates a glorious period of pilgrimage that bestows spiritual reinforcement to millions in solemnizing the occasion of a holy pit of Kapil, is lighted from the height. A mountain range about 15 kilometers away facing the shrine. The millions of pilgrims, we are currently witnessing Makaravilakku, and millions of pilgrims are getting immersed themselves in the spiritual experience for the second time.
seeing the sacred Jyoti, and that reminds him of the eternal light of spiritual presence within, symbolized by the divinity form of Lord Ayyappa, waiting for the third time it to appear. Lord Ayyappa, who illuminates the millions of galaxies, a source behind the formation, maintenance and dissolution of the universe and the evolution of life and its pilgrimage to spiritual freedom. That has happened. अंत में मगर ज्योति दिखाई दिया और भक्त ने पूरे आवेश के साथ, पूरी भक्ति के साथ मगर ज्योति का दर्शन किया। उसके साथ मगर ज्योति से उनको जो आशीर्वाद भगवान का मिला है उसको लेकर वो जाने वाले हैं। अब पूरे 1 साल तक उनके अंदर वो उम्मीद के साथ, वो उमंग के साथ अगले साल फिर मिलने की उम्मीद लेकर वो जा रहे हैं वापस। अभी मगर ज्योति के दर्शन करने के बाद लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बस यही घटना के लिए, इसी वक्त के लिए बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे थे भक्त लोग, और उनको दर्शन मिल गया मगर ज्योति का और भगवान का, स्वामी अय्यप्पा का। 18वीं सोने की सीढ़ियाँ के ऊपर चढ़कर दर्शन करके, उनके पाद का स्पर्शन करके, आशीर्वाद लेकर, मगर ज्योति का दर्शन करके, मगर ज्योति का आशीर्वाद लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ पुजारी के पास से बड़ी कोशिश के साथ वो प्रसाद भी ले रहे हैं। प्रसाद को बड़ी हिफाजत से वो लेके जाएंगे। उसके बाद अरवाना पायसम बोलकर वो जो प्रसाद है, जो शुद्ध घी में बनाया जाता है, वो प्रसाद को भी लेके जाएंगे अपने साथ, और पूरे 1 साल वो इंतज़ार करेंगे आने के लिए फिर से इस मगर ज्योति के अय्यप्पा स्वामी के दर्शन के लिए। धन्यवाद।